Good morning, everyone. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I given you in the last video class. In the last video class, we discussed some problems based on the concept of profit and loss, in which we have to find out the cost price and the selling price. Today, we are moving to our next topic, that is percentage increase or percentage decrease concept. So, what is the percentage increase and what is the percentage decrease? So, if you any item, consider an item whose price is 60 रुपीज़, उसका प्राइस है वो कितना है आपका 60 रुपीज़ है. आफ्टर सम टाइम्स द प्राइस वेंट अप, उसका प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. ठीक है, एंड इट बिकम्स वट ₹80. कितना हो गया बेटा, ₹80. नाउ द क्वेश्चन आस्क्स यू कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज. आपका परसेंटेज इंक्रीज क्या है 60 से 80, 60 रुपीज से 80 रुपीज होने में. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दिस आइटम. सो हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट. सो इफ यू सी व्हाट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू, there is an increase of what 20 rupees. How कैसे ये कैसे फाइंड आउट किया, वी सब्ट्रैक्टेड द फाइनल वन, दैट इज जो एंड कहाँ पे हुआ 80 रुपीज में, स्टार्ट कहाँ पे हुआ 60 रुपीज. सो दिस विल बी द इनिशियल वैल्यू एंड दिस विल बी द फाइनल वैल्यू. ये आपकी हो गया इनिशियल वैल्यू, ये क्या हो गया आपकी फाइनल वैल्यू. सो व्हाट यू विल डू टू फाइंड आउट द चेंज इन द वैल्यू, दैट इज यू विल सब्ट्रैक्ट द फाइनल वैल्यू बाय द इनिशियल वैल्यू. तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, दैट इज 80 एंड व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू, दैट इज 60. तो 80 माइनस 60 गिव्स यू व्हाट 20. तो आपका जो इंक्रीज आया कितने रुपीज का है बेटा, 20 रुपीज का. एंड व्हाट वाज द स्टार्टिंग वन, दैट इज 60. सो 60 में से कितने में कितने का इंक्रीज आया, 20 का. तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू व्हाट परसेंटेज, सो व्हाट इज द परसेंटेज, यू नो व्हेन वी कंपेयर एनीथिंग आउट ऑफ 100. सो 60 में कितने का इंक्रीमेंट आया, 20 का. इफ यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन द विद रिस्पेक्ट टू 100, तो व्हाट यू विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस बिकम्स, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 3 कितना 60. तो दिस इज कमिंग इक्वल्स टू व्हाट 100 upon 3 percentage, which will be coming equals to what 33.33%. So what does it shows? It shows that there is a increase of how many percent, 33.33% in the value from rupees 60 to rupees 80. So what is the percentage increase? Percentage increase basically change in the value upon my initial value multiply 100. So what is the change in the value? What is the increase? Consider अगर क्या होता, अगर हमें इसमें क्या होता बेटा, there is a fall, क्या हुआ प्राइस में क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है. तो पहले 80 था, अब कितना हो गया 60. तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका 60 और इनिशियल क्या हो जाएगा आपका 80. तो यहाँ पे करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस में. बट यू हैव टू इग्नोर दैट माइनस को इग्नोर करना है और परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट. यहाँ पे 60 के जगह क्या आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में 80 आ जाएगा. सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इज बेसिकली द चेंज इन द वैल्यू, कितना वैल्यू में चेंज आ रहा है अपॉन में इनिशियल वैल्यू, व्हाट वाज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द दैट, इट कैन बी अ पॉपुलेशन ऑल्सो, इट कैन बी अ प्राइस ऑल्सो, मल्टीप्लाई इट बाय 100. ठीक है. सो परसेंटेज डिक्रीज ऑल्सो द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, दैट इज चेंज इन द वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100. एंड व्हाट इज द चेंज, हाउ यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन द वैल्यू. चेंज इन द वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग द फाइनल वैल्यू. जो फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. इफ इट इज कमिंग, if there is a increase then it will be coming in positive, if there is a decrease it will be coming in the negative sign. So you have to ignore this negative sign and you have to calculate what percentage decrease. Okay, so now we will move to the question based on the concept of percentage increase or percentage decrease in this exercise 8.3. So let us move. Now this is the third question of your exercise 8.3, which says the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find a percentage decrease. There is a city in which there is a decrease in the population from 25,000 to 24,500. Starting में 25,000 थी and the end there is 24,500 and you have been asked what is the percentage decrease in the population. So what is given to us? First of all we will write down that सॉल्यूशन. इनिशियल पॉपुलेशन, जो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी बेटा, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है दैट इज इनिशियल वैल्यू, वो क्या हो जाएगी पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन. तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन है. इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 25,000 एंड द फाइनल पॉपुलेशन कहाँ पे आगे एंड हुआ है 24,500. तो दिस विल बी द फाइनल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 24,500. And we have to find out the percentage decrease. For finding out the percentage decrease, first of all we have to find out the change in the value. So the change in population
change in population and that is equals to what? We will subtract these two, तो 25,000 minus क्या हो जाएगा 24,500. When you subtract these two, so the answer coming that is equals to what? 500. So कितने का change आया बेटा? 500. So we have to calculate the percentage decrease. So the percentage decrease that will be equals to change in population. I'm writing pop, that means population upon my initial population multiply 100. So what is the change? That is of 500. And what was the starting one? That is 25,000. Multiply 100. So 0 से 0 cancel, ये 0 से 0 cancel, ये 0 से 0 cancel. 25 ones are 25, 25 twos are 50. So we are getting 2 and this will be the जो population percentage decrease हुआ है वो कितना हुआ है? Percentage decrease is equals to what? How much? 2%. 2% का क्या हुआ है? Population में decrement हुआ है and this is the answer. So I hope you understood the concept of percentage decrease. Now we will move to the next. That is the question number 4 of same type, which is based on the percentage increase of your exercise 8.3. Now this is the fourth question of your exercise 8.3, which says Arun bought car for rupees 3,50,000. Next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of a price increase? In this question, there is a guy, that is Arun, who bought a car for rupees 3,50,000. अरुण ने एक कार खरीदी है जिसके प्राइस कितना बेटा 3,50,000 है. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? जो प्राइस था वो इंक्रीज कर गया एंड वो कितना हो गया? दैट इज 3,70,000 हो गया. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अ प्राइस इंक्रीज. क्या परसेंटेज है प्राइस इंक्रीज का? दैट यू हैव टू टेल. दिस इज बेसिकली यू हैव टू टेल द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट दैट यूजिंग what percentage increase formula. So what is given to us? We will write it down first. So initial price किसका? कार का. इनिशियल प्राइस ऑफ कार. प्राइस का जो कार का जो इनिशियल प्राइस था दैट वाज व्हाट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? रुपीज 3,50,000. सो दिस वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ द कार. सो द फाइनल प्राइस जो इंक्रीज हो गया, फाइनल प्राइस ऑफ कार का जो प्राइस था वो कहाँ पहुंच गया बेटा? दैट इज रुपीज 3,70,000. दिस इज द फाइनल प्राइस इंक्रीज होने के बाद. चेंज इन प्राइस ऑफ कार के प्राइस में जो चेंज आया है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 3,50,000 माइनस, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है. सो दिस विल बी फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस. तो फाइनल प्राइस कितना है बेटा आपका? दैट इज 3,70,000 and initial price was 3,50,000. When we subtract these two, so there is a difference of how much? Increase कितने का हुआ बेटा? 20,000 का increment हुआ. कितने थाउजेंड का? 20,000 का. there is a change in the price. So the change is how much? 20,000. So what we have to calculate? We have to calculate the percentage increase in the price. So percentage increase in price, that will be equals to what? Change in price upon initial price multiply what? 100. So this will be equals to change कितने का बेटा? 20,000. This will be 20,000 divided by initial price, that is 3,50,000.
50,000 multiply what 100. So ये 20 से 20 cancel, ये 20 से ये 20 cancel. Then this is 5 7 ja and 5 40 ja 200. So we are getting 40 upon 7 percentage. That will be equals to what? 5 whole 5 upon 7%. This is the percentage increase in the price of car from 3,50,000 to 3,70,000 में जाने में जो percentage increase हुआ है, that is 5 whole 5 upon 5% का. So I hope you understood the concept of this percentage increase and percentage decrease. So the homework for today will be in the page number 167. There is a try this box in which question number 1 and question number 2 will be the homework, which is based on the same concept of your percentage increase and percentage decrease. So homework, page number 167. Try these questions, that is question number 1 and question number 2 for the homework. So with this we finish off with today's class. That's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.